everyone. Today we are going to learn in IUPAC nomenclature functional group. Functional group. Now first, what is a functional group? Functional group is a group of element which change the all property both physical and chemical. Functional group is a group of element which change the all property like physical and chemical property of a compound. For example, we have a compound hydrocarbon CH3, CH2 and CH3. We already know it's a aliphatic hydrocarbon or a saturated aliphatic hydrocarbon. Now, in this compound, one hydrogen is replaced by Z group and CH3, CH2, CH2, Z will form. If Z is a functional group, then if Z is a functional group, then Z changes the all physical and chemical property of propane. Now, this compound is not a propane. It's a no according Z or a functional group. For example, we have Z is a OH and OH is a functional group. OH is a functional group. So, OH attached with CH3, CH2, CH2, OH. Now, it's not a saturated hydrocarbon alkane. Not a saturated hydrocarbon alkane. Now, it's a alcohol molecule. It's a alcohol molecule. Alkene is called paraffin, but it's not a paraffin, it's a alcohol. And all physical and chemical property are changed in this compound. For example, boiling point of this compound or boiling point of alcohol is more than propane or alkane. And chemical property are also changed due to OH group. Another solubility of a propane and this compound alcohol, and exact name is propanol. Propanol are completely different. Propane does not dissolve in water, but propanol dissolve in a water because propanol form the H bond with the water, but alkane or propane does not form the H bond. So, once again, what is a functional group? Functional group is a group of elements which change the all property of any compound like physical and chemical property. For example, propane does not dissolve in water, but propanol or alcohol dissolve in water. Why? If any compound dissolve in water,
then this compound create a H bond with water. Propane does not form the H bond with water, but propanol exactly form the H bond with the water. Now, functional group are present in a preference table. Total 14 functional group are present in preference table. First, COOH. COOH is a functional group. It may COOH attached with a hydrocarbon, then compound called carboxylic acid, not a hydrocarbon. For example, we have CH3, CH2, CH2, OH or COOH. OH beta COOH. Before it attach this group CH3, CH2 and CH3. It's a propane. But it's a carboxylic acid. Next, OH is a functional group, CHO is functional group, CO is functional group. अभी इन फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल बनाएंगे बेटा, और उस टेबल को आपको एज इट इज याद रखना है। और उसी टेबल से हम नोमेनक्लेचर की अगली बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट अटैच्ड विद द हाइड्रोकार्बन एंड चेंज द ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, OH is a functional group, COOH is a functional group, CHO is a functional group. Many functional groups are present in preference table. In a preference table, all functional groups are present in a regular order. In a preference table, top functional group is a main functional group and other any functional group are only substitute group. क्या बताना चाहता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। जो हम प्रेफरेंस टेबल पढ़ेंगे, इस प्रेफरेंस टेबल में जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उन ग्रुप का एक फिक्स ऑर्डर होगा और उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको हमें स्टडी करना है और वैसे ही वैसे उसको हमें याद करना है। फिर सपोज करिए फंक्शनल ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं या प्रेफरेंस टेबल में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, उन फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे। वहां पे क्या बताया मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई। आज हमने आईपीएससी मेथड में फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट किया और फंक्शनल ग्रुप की एक डेफिनेशन बताई है और डेफिनेशन में सिर्फ मैंने इतना बोला है कि फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट एंड दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट अटैच विद हाइड्रोकार्बन चेन and change the all physical and chemical property of a compound. Functional group are present in a table. Functional group are present in a table and this table called preference table. In a preference table, all functional group are present in a regular order and all functional group are present in a regular order. अब हम जब भी नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे तो पहले इन प्रेफरेंस टेबल में जो भी फंक्शनल ग्रुप है इनको हमें एज इट इज याद करना है और इसमें मैं आपको दो बातें को बताऊंगा, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। इसकी स्टडी हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे और वहां इसका आपको मैं पूरा का पूरा जितने भी टेबल में जो भी ग्रुप है वो सबको एक्सप्लेन करूंगा।